हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज नाउ अ शेड्यूल्ड बैंक। सो व्हाट इज दिस न्यूज ऑल अबाउट? क्या है ये न्यूज? क्यों हम पढ़ रहे हैं इस न्यूज को? ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या है? एयरटेल के बारे में तो सुना है। व्हाट इज दिस पेमेंट्स बैंक ऑल अबाउट? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो आई नो दैट स्टूडेंट्स माइट नॉट बी हैविंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज नाउ व्हाट इज अ पेमेंट्स बैंक। सभी को पता है अब हमारी कंट्री में जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है कि ये पेमेंट्स बैंक क्या है। एंड इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी हैड कोविड, तो कोविड में भी नाउ पीपल नो व्हाट इज पेमेंट्स बैंक, राइट? तो दैट इज वाई this topic will become it will not just become very fun to understand, but also it's very easy to understand. इसको समझना भी बहुत easy है। ठीक है, तो शुरू करें इस टॉपिक को। आप लोग रेडी हो? ऑल ऑफ यू आर रेडी? फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ पेमेंट्स बैंक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पेमेंट्स बैंक क्या होता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई गेस आप लोग सभी बच्चे रेडी हो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। द क्लास विल बी bilingual, that is 70% English will be used, 30% Hindi will be used, so that every student can understand what we are studying today. All right, let's get started. So payments bank, like any other bank, it is similar to other banks, but it operates on a small scale. Small scale means it operates on a रिस्ट्रिक्टेड स्केल। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड स्केल पे ऑपरेट करता है। एंड हियर what do you mean by restricted scale? There are some restrictions that are imposed on the banks है पेमेंट्स बैंक। वैसे तो ये नॉर्मल बैंक की तरह है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, but it cannot give loans or issue credit cards. Another important point about Payments Bank is that a committee which was headed by Dr. Nachiket Moore recommended the setting up of Payments Bank to cater to the lower income groups and small businesses. So when we say that Payments Bank, it operates on a small scale, it means that credit risk is not involved in the Payments Bank because it cannot give loans or issue credit cards. So there is no credit risk. It can accept demand deposits only. That means that it can form only savings and current accounts. It cannot accept time deposits. It cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial service activities. So NBFC वाला कोई काम पेमेंट्स बैंक नहीं करता है। ठीक है, and another important point is that it comes under differentiated bank license. Why? Because it cannot offer all the services that a commercial bank can offer. Okay, in particular it cannot lend, so that is why it is given differentiated bank license. You have to remember one point over here, that RBI जो है ना, वो दो तरीके के banking license देता है. There are two kinds of banking licenses which are granted by RBI. First is, write it down, first type of license is universal bank license. ये पहला type का license है। ठीक है, second is differentiated bank license. Differentiated bank license is given to those banks which are not performing the services of a commercial bank. Okay, and universal bank license तो जो commercial और बाकी के banks है उनको ये मिलता है। And payments bank, it can take deposits up to rupees 1 lakh per account. Write it down. Can take deposits, write it down, up to rupees 1 lakh per account. Okay, so it can issue debit cards but it cannot issue credit cards. तो debit card तो ये issue कर सकता है, but ये credit card issue नहीं कर सकता. Okay, what are the examples of commercial banks? Like SBI, ICICI. Okay, these type of banks do not have such kind of restrictions. तो यहाँ तक point clear हो गया सभी को? So these are payments bank. Okay, now there are certain important provisions for a payments bank. Let us understand that also. Now these are the three important provisions when it comes to the payments bank. First is capital requirement. Minimum paid up capital requirement is rupees 100 crore. Remember this, not 10 but 100 crore. Second is promoters contribution. So here the minimum initial contribution
to the paid up equity capital shall be at least 40% for the first 5 years from the time the business starts. Okay. And third is foreign shareholding. So it should be as per FDI policy only, foreign direct investment policy only. Okay. So these are the important pointers that you should remember about the payments bank when it comes to your GS paper 3 or when it comes to your preliminary examination. Before we head forwards, here's a small announcement for all of you. देखो बच्चों, आपके लिए ना अनअकैडमी लेकर आया है resolution to crack UPSC CSE 2023. So if you are preparing for 2023 attempt ना, here's a chance for you to prepare under the guidance of those who have actually cracked this examination and those who are subject experts, जो कि बहुत सालों से उस subject से deal कर रहे हैं, तो वो अपनी expertise आपको देते हैं, आपको आपका basic foundation strong करने में help करते हैं. Additional benefits is that if you subscribe to Unacademy Plus, you do not have to search for books. Unacademy is going to provide you 20 GS books which will be delivered to your house. And we have test series also, we have optionals also. Everything is covered on Unacademy. You do not have to run here and there. And during this COVID situation, you can study at your home, at the comfort of your home, at the safety of your home. Okay. So here we are offering this introductory offer wherein if you use my code ARPITA10, ये कोड अगर आप यूज करते हो ना ARPITA10, तो आपको 70,000 से सीधा डिस्काउंट मिलकर 63,000 ही पे करना पड़ेगा. ठीक है. वैसे तो the original price is 78,000, but in this introductory offer using this code ARPITA10 on 18 months combo subscription, you will just have to pay 63,000. So you are going to save 15,000 over here. Okay, and combo है, combo means 18 months का combo मतलब we are going to help you prepare for prelims, for mains and as well as including your optional. तो ये होता है आपका combo subscription. समझ आ रही है बात? And this offer is valid till 19th Jan only. ये offer सिर्फ 19 Jan तक ही valid है बेटा. ठीक है. So make sure that you take your subscription today because batches are starting from 19 Jan ना. That is why before that, see, we have so many teachers. रमेश सिंह सर भी है हमारे पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स के. ठीक है. हमारे पास यहाँ पर सुदर्शन गुजर सर भी है, मृणाल पटेल सर भी है हमारे पास यहाँ पर. ठीक है. राकेश वर्मा सर भी हैं जो कि खुद एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है. So all these experts are going to help you, guide you throughout this journey. The links are given below in the description box. Make sure that you subscribe today. So as per the news, Airtel Payments Bank is an Indian payments bank. Airtel Payments Bank क्या है? एक Indian payments bank है and the headquarter is in New Delhi. ठीक है. Now this company is a subsidiary of Bharti Airtel. Indian company है ये बेटा. ठीक है. So on 5th Jan 2022, it was granted the scheduled bank status by RBI. तो RBI ने RBI Act 1934 के अंदर Airtel Payments Bank को एक scheduled bank का status दे दिया. ठीक है. Now we have understood what is a payments bank. Now let us understand what is the meaning of scheduled bank. Okay. So now let us understand what exactly is a scheduled bank. देखो, scheduled banks refer to those banks which have been included in the second schedule of RBI Act 1934. तो RBI Act का जो सेक्शन schedule 2 होता है ना, उसमें जो banks listed होते हैं वो scheduled banks होते हैं. Okay. And RBI in turn includes only those banks in this schedule which satisfy the criteria which are laid down in section 42 of the act. इस act का जो section 42 है उसमें जो criteria लिखे हैं, अगर उन criteria को match करता है कोई बैंक तो वो schedule 2 में आ जाता है और scheduled bank बन जाता है. And every scheduled bank enjoys two types of principal facilities. Okay, so what kind of principal facilities are enjoyed by the scheduled banks? We are going to write it down over here. Scheduled banks, okay, two types of principal facilities. दो तरीके की इसमें principal facilities होती हैं. First is that it becomes eligible for the debts and loans at bank rate. बैंक रेट पे डेट्स और लोन्स के लिए ये एलिजिबल हो जाता है. किससे? फ्रॉम RBI. इट कैन गेट द लोन्स और डेट्स फ्रॉम RBI एट बैंक रेट. ओके. सेकेंड, दैट इट ऑटोमेटिकली, राइट इट डाउन, इट ऑटोमेटिकली acquires the membership of clearing house. Now you must be wondering, ma'am, what is this clearing house? क्या है ये? And if the bank is acquiring membership of clearing house, what does that mean? Let us understand that also.
So clearing house is a banker's establishment where the checks and bills from the member banks are exchanged so that only the balances need to be paid in cash. Okay, that is a clearing house. उसको हम clearing house बोलते हैं. Or you can say, you must have studied this if you are a arts or commerce student in 11th and 12th standard. Clearing house is an intermediary. आपने पढ़ा होगा ना 12th और 11th में, अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हो. ये एक इंटरमीडियरी होता है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इट्स अ काइंड ऑफ एजेंसी और सेपरेट कॉर्पोरेशन of a futures exchange which is responsible for settling the trading accounts. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये होता है आपका clearing house. Now we have understood the Airtel Payments Bank also. It is amongst the fastest growing digital banks in the country. It offers a suite of digital solutions through the Airtel Thanks app. आप लोगों के पास होगा, if you are using Airtel, I too have the Airtel Thanks app. उसके through I can pay my electricity bills, my Wi-Fi bills, other bills. I can make payments to other bank accounts, mobile phones, etc. Okay. So the bank turned profitable in the quarter ended September 2021. कोविड की वजह से सितंबर में काफी प्रॉफिट हुआ था एयरटेल पेमेंट्स बैंक को. सब घर पे ही से ही पेमेंट कर रहे थे. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, व्हाट इज द डिफरेंस? पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट ओनली अप टू 1 lakh per individual customer. Now Airtel Payments Bank is a scheduled bank. It can accept deposit of ₹5 lakh per individual. Okay, but it cannot give loans. ठीक है, it can open small saving accounts, it can provide remittance services, it is allowed to issue debit cards, okay, but not credit cards. And small finance bank, it is allowed to take deposits of any amount, no restriction on deposit amount. It can lend, but the focus will be on small lending only, small loans. It can finance small business units, small marginal farmers, MSMEs. It can provide remittances and credit cards also. It is also allowed to issue ATM or debit cards. And it has to ensure 50% of loan portfolio constitutes advances, that is loans of up to ₹25 lakh. यहाँ तो वो लोन दे ही नहीं सकते हैं. ठीक है, समझ आ गई बात? So this is all about the Airtel Payments Bank, which has now been converted into scheduled bank. That means its scope of operation has expanded. Airtel Payments Bank का जो operations होंगे ना, scope of operation होगा, वो अब expand कर जाएगा. यानी कि भैया धूम मच रही है Airtel Payments Bank की भारत में. ठीक है, काफी मुनाफा हो रहा है, बिजनेस जोर शोर से चल रहा है इनका. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी अनाउंसमेंट है आपके लिए. कल है 16 जनवरी. ठीक है, 16 जैन है. डरना मत, इतनी जल्दी आपका एग्जाम पास नहीं आ रहा. ठीक है, तो कल 16 जैन को ना हम कॉम्बैट कर रहे हैं. यानी कि कॉम्बैट मतलब आपका जो हर संडे को एक रिचुअल होता है ना, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लेते हैं, वही होने वाला है. तो इसमें ना ये फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, इट्स अ फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट दैट अनअकैडमी कंडक्ट्स एवरी संडे. टुमारो ऑल्सो यू हैव दिस टेस्ट. इट 1 hour टेस्ट होगा 60 minutes का, wherein if you score rank 1 to 3 you will get 100% scholarship, rank 4 to 10 will get 75% scholarship, rank 11 to 50 will get 50% scholarship, and rank 51 to 100 will get 25% scholarship. And this test will be conducted live on website of Unacademy and also the Unacademy learning app. So make sure that you give this test. The link is given below. Enroll and use the invite code ARPITA10. तो ये था आपका आज का लेक्चर Airtel Payments Bank, which is now a scheduled bank. Make sure that you hit that subscribe button if you haven't subscribed yet, so that you can get all the notifications on time. Okay? तो हम करते हैं अब इस लेक्चर का एंड. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो. इसी नोट पर हैव अ नाइस डे. वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल.